So we are going to study the combination of resistances. There are two types of combination of resistances: series combination, parallel combination. Let's suppose we have given any three resistances R1, R2, R3. Now, how we are going to join them will be depending on these two types of combination of resistances, and afterwards mixed combination. It means either they will be in series or parallel or in their mixed combination. So what is the meaning of series combination? When all the resistances are connected end to end, means the last end of the resistance of last end of the first resistance is connected to the first end of the second resistance. Last end of second resistance should be connected first end of the third resistance, and so on, in such a way that the current passing through them should be same, because the current, electric current, will get only a single path to flow through that. So hence the electric current will same in the series combination. So we can define in the way in terms of electric current, what does series combination mean? Series combination means such combination of resistances in which the electric current remains same throughout the circuit is called series combination. For this, all the resistances should be added end to end. It is just like the combination, just like simple example, like a chain, like iron chain or something, this kind of, or some necklace of beads, right? So such combination in which all the resistances will be connected end to end. And I guess it is pretty much clear to you, because all of you have studied in grade 10 as well. So it's not a big concept for you. R1, R2, R3. Such combination is called series combination. Let's suppose these are the endpoints A and B. Then the current passing through R1, R2, R3 should be same I. Right? While in the parallel combination, all the resistance should be connected in such a way that all their first end, whatever end can be considered first end, doesn't matter, whatever, but all the one end, whether you will take this one or this one, all one end of the resistances should be connected at a particular point, and all remaining ends will be connected at a particular point. Then such combination of resistances is called parallel combination. For example, if I'll consider these points, and if I'll join them together, so how it will be in that way. In this way, I would be able to connect them. Okay, these are simply wires, so don't confuse that how can this wire has been bended. These are the just simple wires, right? So simple wires can be bended at any cost, right? At any time. So just like these two wires are there, so you can say this is one resistance, this is another resistance, and their one end points has been joined here, and another points are joined here. So this is the example of parallel combination. Got it? So this is R1, this is R2, and this is R3. So all are connected at a single point. So at point A, all one end of all the resistance has been connected, and at point B, all another ends of the resistances are being connected, R1, R2, R3. So such combination of resistances is called series and parallel combination. Got it? Now let's discuss in detail what does series do and what will parallel. Okay. In parallel, since the current will get the path, different paths, that's why current will divide itself. Hence, current cannot be same in parallel combination, while the potential across each end between these terminals A and B, since R1 is being connected between A and B, that's why potential between R1, if I'll assume it as a V, then again R2 is also being connected in between A and B also. So that's why whenever, or this learn this concept, in between two terminals, in between 2 points, always the potential difference will remain same. Between two same points,
the difference of potential difference always remains same. Learn this concept. Done. So it means if in between P and Q there is the difference of 10 volt, then whatever thing you will connect in between them, every time between P and Q, the potential difference, whether whatever is you are connecting, whether it's a resistance, whether it's a battery, if you have been told that at some situation that the difference, potential difference was 10 volt and we have not changed it, that means whatever thing you will connect in between them, and how many number of it doesn't matter, one resistance, two resistance, another coil, whatever, all together should be, the difference between these two terminals should be 10 volt only. This is the concept, right? So if I think about R1 is being connected in between A and B it is being connected. Similarly, R2 is also being connected in between A and B, R3 is also being connected in between A and B. That's why the potential difference across R1, R2, R3 remains same. So we can define the parallel combination in terms of potential difference as well. Such combination in which the potential difference between two terminals of the combination of the resistance remains same is called the parallel combination. Done. So in series combination, current will remain same while the potential will be different across each and every resistance, while in parallel potential will remain same and current will be different across each and every resistance. This is called series combination and parallel combination. And afterwards, if I will be joining all together, then that could be called as mixed combination of the resistances. Yes, how many of you understood till now? देखिए sir. So now let's discuss in detail इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, तो और उसका डेरिवेशन जल्दी से करेंगे, इसको खत्म करेंगे. अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस साल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है. ठीक है, तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज. तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं खींचने वाला हूँ, आज ही की क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे ताकि हमारा सिलेबस भी थोड़ा सा उसी अकॉर्डिंग स्पीड पे बना रहे. अननेसेसरी की चीजें जो भी है, जो भी डिलीट की जा चुकी है, वो हम अभी नहीं कवर करेंगे, वो फिर बाद में कवर करेंगे जब आपका बोर्ड का सिलेबस खत्म हो चुका होगा उसके बाद में. ठीक है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसमें बस छोटी मोटी जो चीजें हैं आपको ध्यान रखिएगा. R1, R2, R3, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है सर्किट के लिए. इस तरीके से सीरीज को बनाया जाएगा, बस बैटरी वगैरह शो नहीं की जाएगी. इन एक्चुअल होगा क्या, एक्चुअल में बैटरी यहाँ पर N टर्मिनल्स पे कनेक्ट की जाएगी. तो ये कनेक्ट कर दिया, तो ये एक बैटरी मान ली. अब इसके अंदर आपके ऊपर है कि आप स्विच बनाओ ना बनाओ, सिंपल, जितना सिंपल रखना चाहते हैं आप उतना सिंपल रख सकते हैं, और जितना इसके अंदर बाकी के एलिमेंट आप डालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, डजंट मैटर. ये प्लस होता है, ये माइनस होता है. लॉन्ग साइड, लॉन्ग टर्मिनल इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्ट साइड, शॉर्ट लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल. तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. So this will provide you the necessary potential difference. तो ध्यान से देखें, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है? इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट. ए पॉइंट. तो इसका मतलब ये पॉइंट, अच्छा, जब तक वायर के बीच में एक से ज्यादा रास्ते, मतलब दो, ये पूरा का पूरा सेम वायर कहलाएगा. यहाँ से बैंड होना विल नॉट गिव यू द अनदर पाथ. एक से ज्यादा अगर रास्ते होंगे तो वो जंक्शन पॉइंट कहलाएगा. और ये वो सभी कंपोनेंट जिस जगह पे अटैच होंगे वो उनकी ब्रांचेस कहलाएंगी, जितनी जगह पे कनेक्टेड होंगी. तो एक तरह से अगर इसको मैं नाम देना चाहूँ, लेट्स सपोज इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू. ठीक है, सो ये एपी इज वन ऑफ द ब्रांच इन विच R1 रेजिस्टेंस इज बीइंग कनेक्टेड, PQ is another branch in which R2 is being connected, QB is another branch in which R3 is being connected. तो ये ब्रांचेस कहलाती है. ठीक है, और ऐसा पॉइंट जहां पे मान लीजिए अब मैं यहीं से यहाँ पर एक चीज ऐसे डिसाइड कर देता, एक चीज ऐसे डिसाइड कर देता, तो यहाँ से मैं मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया या इधर रेजिस्टेंस,
तो यहाँ देखा तो इस जगह पे अगर कोई आएगा तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, चाहे वो करंट हो चाहे कोई भी हो, कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो आपको ये देखना है कि किसी भी चीज को, आप एक सिंपल सी बात है, आप हमेशा एक गाड़ी को लेकर के आया करो। शायद बीच में भी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो गाड़ी कहाँ पर जा सकती है उस रास्ते के आने पर। अगर वो केवल एक ही साइड में मुड़ सकती है तो वो एक सिंगल रास्ता है, उसमें कोई बैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि उसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, एक से ज्यादा पाथ नहीं है। लेकिन यहाँ जाने के बाद अगर इसके पास फैसिलिटी दिख रही हो कि एक से ज्यादा रास्तों में जा सकती है, इसका मतलब वहां डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और जहां से ये रास्ते चालू हो रहे हैं वो जंक्शन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो डन। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से गाड़ी को लेकर के आऊं तो सिर्फ इसके पास मुड़ने का यही एक रास्ता है। इसका मतलब ये पॉइंट, ए पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो भी आप कहीं पे भी एक पॉइंट बनाना चाहो तो दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी, डन। So the potential difference between is, let's suppose V volt. अब आप क्या कर सकते हो, V को कोई वैल्यू मान के अगर समझना चाहते हो तो 10 वोल्ट, तो प्लस वाले को आप क्या मान सकते हो 10 वोल्ट, और माइनस वाले को क्या मान सकते हो 0 वोल्ट, क्योंकि ये V वोल्टेज नहीं, सिर्फ वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस है, ये इन दो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस है। 10 माइनस 0, जो भी आप इधर और इधर का माइनस करो वो आंसर 10 आना चाहिए। आप चाहो तो उसको 20 लिख सकते हो तो फिर इधर 10 लिखोगे, आप चाहो तो इधर क्या लिखोगे, मान लीजिए -5, इधर -5, तो आप इधर -15 लिखोगे, डन। मतलब आपको इस तरह से समझना है कि इन दोनों का डिफरेंस लूं तो आंसर 10 वोल्ट है, तो ये चीज आपको समझनी होती है। मोस्ट कन्वीनियंट रखने के लिए दिस वे इज बीइंग टेकन, कि प्लस वाले को जो भी वोल्टेज यहां बोला जा रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज बीइंग गिवन टू अस इज 10 वोल्ट, देन इन जनरल वी टेक +1 एज 10 वोल्ट, -1 इज 0। अब ये माइनस जहां 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 घूम रहा होगा वो हिस्सा पूरा का पूरा 0 वोल्ट पे चला जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने एक ब्रांच यहाँ पे निकाल दी होती तो ये भी यहाँ पर अभी ये 0 वोल्ट चल रहा होता, एक और ब्रांच वहां से निकाल दूंगा, उधर से निकालूंगा तो वो 10 वोल्ट पे चल जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को समझना होता है। कॉन्सेप्ट क्या बताया, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, वो हर जगह ए और बी अगर सेम रखोगे तो 10 वोल्ट मिलना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। क्लियरली ए और पी इज नॉट ए बी, तो यहां पर 10 वोल्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। P and Q is not AB, that's why they will not give you the 10 volt. Q and B is not AB, is not equivalent to AB, ये नहीं देंगे। लेकिन A P Q B, तो A से B के बीच में जितने भी आ रहे हैं ये सब मिलकर के क्या देने चाहिए 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इन सबका सम जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा ये कुछ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, ये कुछ अलग आएगा, इन सबका सम मिलकर के कितना बनना चाहिए 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल वुड बी डिवाइडेड, यस। तो सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और करंट को देखें तो करंट है आपकी गाड़ी, आप गाड़ी को देखो लेकर के चले जाओ, कार लेकर के जाओ, इसके ऊपर चलाओ, कार कितने रास्तों से जा सकती है, कार के अंदर आपकी करंट बैठी हुई है, जितने एम्पियर की करंट मानना चाहो उतने का एम्पियर की करंट बैठी हुई है। 10 एम्पियर की लेकर के जा रहे हो, 10 एम्पियर की बैठी है, 20 जो भी है, मतलब रेस्पेक्टिव समझने के हिसाब से है ना। मैं अभी वो वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करेंगे कितना आएगा, उस हिसाब से वो एक डिफरेंट चीज है। पर जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं कि ये एक गाड़ी चल रही है, ये रास्ता है, इस पे इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो गाड़ी सीधी चलती जाएगी ना यार, तो उसके अंदर करंट चेंज थोड़ी हो रही है, तो आराम से बैठे बैठे एक बार बढ़ रही है, एक बार कार में बैठ करके, तो यहाँ पर करंट क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। अच्छा, करंट क्या है, बहुत स्मार्ट। करंट क्या होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है। क्या होती है स्मार्ट, बीच में से कहीं पे इसको गड्ढा नजर आ गया, इसको नजर आएगा नहीं, इनको पता चल जाता है इस कार क्या है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये, बस मतलब ये अपने जिस रोड पे स्टार्ट करती है ना, ये बस इनके टच में होते ही इनको पता चल जाता है कि आगे गड्ढा है, तो निकलेगी नहीं, करंट क्या है कि रहने दो, हमें नहीं जाना वहां, जाकर गड्ढे में कौन गिरेगा। सो इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, current will not leave its circuit, means its energy source से बाहर ही नहीं आएगी, चार्ज will not flow at any cost। अगर सर्किट बीच में कहीं टूटा हुआ है तो, और वही रास्ता उसके लिए फ्लो होने के लिए अवेलेबल है तो
अगर और कोई another way is available to that current, then definitely that current will choose that path. एक से ज्यादा पाथ मिलेंगे तो फिर रजनीकांत बन जाएगी, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगी, आधी इधर जाओ आधी उधर जाओ, और अगर तीन हुए तो बाकी मेरे पीछे आओ, वो वाला सीन बन जाएगा. ठीक है. सो करंट always pass through same in the series combination of the resistances. Potential will get divided. So let's suppose this is R1 के रेस्पेक्ट में V1 है और PQ के रेस्पेक्ट में V2 है, यानी कि R2 के रेस्पेक्ट में, और R3 के रेस्पेक्ट में V3 है. लेट्स सपोज. ठीक है. तो अब आपसे पूछा गया साहब कि ये तीन रेजिस्टेंसेस आपने लगा रखे, तो बताओ बार बार अगर मेरे को कोई सर्किट बनाना हो तो तीन रेजिस्टेंस अगर अलग अलग लगाऊं तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इन तीन रेजिस्टेंस को हटा दो, कोई एक इकट्ठा ही रेजिस्टेंस लगा जो इन तीनों का काम कर दे? तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ऐसे डायग्राम को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. द डायग्राम which will give you the net equivalent value of all these three resistances or whatever resistances are being connected in the series combination is called the equivalent circuit diagram. So let's suppose this is A and B. Since I have taken the battery should not be changed, right? So this is V volt battery, plus minus terminal, I current is flowing, and the combined effect of R1, R2 and R3 is might be given by certain resistance which is called RS or R equivalent, REQ, or sometimes RSEQ. All symbols or all representations are same. They are representing what? Their combined effect of all the resistances, whatever resistances are being connected inside the series combination, all together effect could be represented by a single resistance called series resistance or equivalent resistance of series combination. So let's suppose this one is, I'm just assuming it to be RS. Then since the circuit is closed, current will pass. How much current will pass? Since this is also giving that overall effect of DC only, it means current should not change, because if this combination would be giving you the 100 ohm, then this resistance should have the single resistance should have the value of 100 ohm. Done. If all together they will be providing us inside the circuit, in whatever manner they will be providing the overall effect of resistance 100 ohm, then whatever resistance we have chosen, it should be of 100 ohm only. So this single resistance should be of 100 ohm, which will be serving as the combined effect of all the resistance being connected in series. Okay. So since this is 100 ohm, battery we haven't changed, battery is same. That's why when V is same, R is same current should be passed through. So that's why the same I current is passing through this resistance. As it is also getting the single path, it means whatever current will pass through this RS ohm resistance, it should be same I. Done. Right? Now let's derive it. Let's derive the relations. For this, I'm just reducing this diagram a little bit. I'm redrawing it. This is A, this is B, plus minus V volt battery or V volt potential difference. I current, this is A, this is B. Let's suppose this is P, this is Q. R1 is being connected in between AP, R2 is being connected in between PQ, R3 is being connected in between QB. Got it? Right? And let's derive the relation between R1, R2, R3 and RS. What should be the value of RS basically? This is our aim. How much ohm or in terms of R1 and R2 should
the RSB. So for this is plus minus, this is RS, which is serving as the combined effect of R1, R2, R3, RS, and we have to see what should be that relation. This is I current, same current I. But in between, since we have seen that potential difference would be different between different branches, V1, V2, V3. Now for this derivation, always remember, start your derivation from that part which is being divided. So just think whenever you need to derive the relation, whether parallel equivalent resistance or series equivalent resistance, just think about which thing is being divided. And there are two things only, potential and current. Resistance obviously would be given to you. So either in between current and voltage, you need to think that which thing is being divided. You need to start your derivation from that side, that portion. So although it doesn't matter to you in this year, but still since potential difference is being divided into V1, V2, V3, but we know that the concept in between AB, total potential difference should be VAB. It means, can I write VAB should be equals to VAB? Obviously. So in between VAB, I have this one is V, and in between these AB, V1, V2, V3 are there. So these should be V1 plus V2 plus V3, right? This V is represented also here because it is also being connected in between A and B. So can I take this one equivalent AB as V? So VAB is also here V only. Getting this? So this V I have taken this one, which is equivalent to this only. VAB. In between A and B, V1 voltage, V2 voltage, V3 voltage. 10 volt has been divided into these, no? So that's why we need to add them directly, right? Now after applying Ohm's law, because this complete thing will be obeying the Ohm's law. This complete branch will be obeying the Ohm's law, and this complete branch will be obeying the Ohm's law. So each and every single resistance will be obeying always the Ohm's law. Got it? So whenever some resistances, current, voltages are shown to you, just apply the Ohm's law and solve it. So after applying the Ohm's law, if this is for equivalent circuit, then according to here, or let me just write separately. In equivalent circuit diagram, V is equals to, by applying Ohm's law, So we are going to apply Ohm's law. So it should be, VAB should be V is equals to IR. So I into RS. Equation number 2. Similarly, in branches AP, PQ and QB. So second, across R1, V1 should be equals to IR1, equation number 3. Third, across R2, V2 should be equals to IR2, equation number, IR2, and equation number 4, yes. And fourth, across RT. Across RT, what it should be? IRT. Okay? V is equals to IRT. These are by Ohm's law. Got it? So, after substituting these values from 2, 3, 4, 5 into 1, what do we get? So, by 2, 3, 4, and 5 into 1, we get, what do we get? We get value of V should be equals to IRS is equals to IR1 plus IR2 plus IR3, and what you have observed, I is common, so it should be R1 plus R2 plus R3, IRS,
I cancelled. We got the value of RS as R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. In general, so this is the equivalent series resistance, right? Equation number 6. In general, if n resistances R1, R2, R3, so on, Rn are being connected in series, then their equivalent resistance will be given by what it should be. Rs is equals to, you can think about it, no? R3, R4, R5, R6, R7, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. So V should be equals to V1 plus V2 plus V3, V4, Vn up to Vn. Again, it will be IRS is equals to IR1, IR2, IR3, so on, IRN. I will be common here. Again, I will be gets cancelled, and then it should be is equals to RS is equals to R1 plus R2, R3, so on. So I'm writing this result without drawing the diagram again. Rn. This is the general formula of what? Series combination of resistances. Got it? This is the series combination of resistances. A special case. What could be the special case? If all values of R1, R2, R3, it means n resistances, whatever being connected in series, are having the same value. So, a special case, if R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to Rn is equals to R, all are having the same value, then Rs will be is equals to R plus R plus R up to so on. R how many times? N times. So what do we get finally? Rs is equals to NR. You got the NR. But whenever you want NR, what you need to do? Join n equal value resistances or having value R in series. You will get the NR. So Rs is equals to NR. This is the special case. How many of you got it till now?